अच्छे लोगों को सपोर्ट क्यों करें सर? नहीं करेंगे. नहीं मैडम, ना करें तो भुगतें. और मैं आ गया मैं तो हुई पॉजिटिव. तो मैडम हम 1 और 1 11 तो हो गए. आपको पता है मरियम नवाज ने ये देख लिया ना शो, तो आप मुसीबत. इतनी स्लो ना मारे, हमारे पास टाइम नहीं है. इनकलाब जिंदाबाद का नारा है. कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान. इट पुट्टो ते थलो सहाफी सो कॉल्ड निकला. यस, और बाबे हो गए हैं और हर एक की खिदमतें करते हैं, हर एक के बूट चाटते हैं और उसके बाद साफी अपने आप को कहलाते हैं. रोज पेट्रोल बम गिरता है, रोज बिजली बम गिरता है, करप्शन का बम गिरता है, रोज झूठ का बम गिरता है. 73 का आइन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम ने दिया, मुतफ़िका आइन था. तो बेसिकली ये आइन नहीं है, ये नक्शा नहीं है, पब्लिक से नक्शेबाजी है. जागीरदार, सरमायादार, भत्ताखोर, क्रिमिनल, कातिल, रस्सागीर, फ्रॉडिये, झूठे, बेईमान. आपने क्यों पीटीआई ज्वाइन की? मैंने तो नहीं ये बातें की थी, ये तो खान साहब ने की थी. अच्छा, बस इस चीज के ऊपर गुलाबी रंग से कोई खास गुलाबी रंग से प्रॉब्लम नहीं थी. थी. बकरा खा के लैम रोस्ट. और ये नवाज शरीफ और मरियम और बिलावल का लाहौर है. कौम है कहाँ? कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता. इधर उधर से आके वो लाते खींचेंगे कि गिर जाए, अगला मारे जाए. पागल ही है ना. मेरे ख्याल से इस वक्त पागल औरत मैं मशहूर हो चुकी हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी फरीहा फरूक. वेलकम टू जवान पाकिस्तान. इंडिया के अंदर ख़ास जो है एक मूवमेंट जो है इसको विटनेस किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस भी मिली. मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि कौन ठीक है कौन गलत है. पॉलिटिकल अपना सबका वो होता है, हक होता है. एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जो यूथ की स्ट्रेंथ थी, दैट वाज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज जुर्रत जो है वो थोड़े लोगों में पाई जाती है और फिर उसको एक्चुअली कुछ करके दिखा देना अगैन इज़ अ ह्यूज चैलेंज. आज मैंने मदऊ किया शिराज अल्ताफ़ साहब को. वो है फाउंडर कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान के. नाउ आई एम श्योर अब आप भी सोच रहे होंगे ये होने क्या जा रहा है. लेट्स बिगिन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर. वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर मेरी बात सुने, ये कॉकरोच पार्टी का जो एक इनिशिएटिव आपने ले लिया है, आपको लगता है करंट सर्कमस्टांसेस में ये आप चैलेंज नहीं कर रहे किसी स्पेसिफिक एंटिटी को? बेसिकली मैडम चैलेंज तो हम कर रहे हैं पाकिस्तान की सोई हुई थकी हुई कौम को, जिनके ऊपर रोज़ पेट्रोल बम गिरता है, रोज़ बिजली बम गिरता है, रोज़ महंगाई बम गिरता है, रोज़ करप्शन का बम गिरता है, रोज़ झूठ का बम गिरता है. लेकिन ये फिर भी फेसबुक सोशल मीडिया पे सोए रहते हैं. पता नहीं भंग पी के सोए रहते हैं या वैसे सोए रहते हैं, दैट आई एम नॉट श्योर, लेकिन सोए रहते हैं. हाँ. तो मैंने ये देखा कि क्योंकि कॉकरोच पार्टी इंडिया, जो कि बेसिकली इंडियन चीफ जस्टिस ने एक अपने केस पे एक सिंपली लाइटर नोट पे कमेंट कर दिया कि जेन जी ये तो कॉकरोच, एक वहाँ के वाइब्रेंट जो रियल सहाफ़ी हैं, हमारे यहाँ तो पता है बड़े शैम सहाफ़ी हैं, इट पुट्टो ते थलो सहाफी सो कॉल्ड निकला. यस, और बाबे हो गए हैं और हर एक की खिदमतें करते हैं, हर एक के बूट चाटते हैं और उसके बाद साफ़ी अपने आप को कहलाते हैं. वहाँ एक जेन्युइन साफ़ी ने इसको रिपोर्ट कर दिया. वहाँ की जेन जी वो बाहर निकल आई. उनमें से एक कोई बहुत ही आप कह ले पैट्रियोटिक पैशनेट इंडियन, उसने इसको लॉन्च कर दी सोशल मीडिया पे. विद इन प्रॉब्ली 2 months उनकी मिलियंस फॉलोइंग हो गई. और रिसेंटली उन्होंने 2 दिन पहले दिखा दिया एक पब्लिक प्रोटेस्ट के जरिए कि जो रिजल्टेंटली वहाँ के इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर को अल्टीमेटली ही हैड टू रिजाइन ताकि वो प्रोटेस्ट खत्म हो. तो मैंने ये सोचा कि हम इतनी देर से कोशिश तो कर ही रहे हैं. आई एम ऑलमोस्ट पोलिटिकली एक्टिव एज पोलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर लास्ट 8 years. तो मैंने कहा चलें हम उसके जरिए कोशिश तो कर ही रहे हैं, हम इसके जरिए कोशिश कर लेते हैं. तो दैट्स व्हाई जस्ट येस्टरडे आई लॉन्च्ड कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक एंड थ्रेड्स. And that's how I contacted you or you contacted me and we are together. तो मेरी बात सुने, रिस्पॉन्स कैसा आया? Very good. आप देखें, it took you probably an hour to get me on your show. Yeah. Is that a small thing? I don't think so. We have been in touch for last couple of months. True. So, but what triggered you yesterday? That this man has guts. He wants to do something for the country. So why should I not give him a chance to come at my show and tell what his vision is, what his goal is, what his thinking is, what his manifesto is? So that's why I'm here. तो मेरी बात सुने, फिर क्या आपकी तरफ से इनकलाब जिंदाबाद का नारा है? देखिए मैडम, पाकिस्तान का जो मसला है वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल, बड़ा कॉम्प्लेक्स. यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम, ये सारा अंग्रेज का सिस्टम है. वो अंग्रेज चला गया और काले अंग्रेज दे गया, सामने अंग्रेज दे गया. अब वो 80 साल से सामने अंग्रेज खेल रहे हैं. अब हम परेशान है, सोई भी जरूर है लेकिन परेशान है, ख्वाब में भी और जागते हुए भी. अल्टीमेटली जब तक आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करते, आपके इल्म में होगा पाकिस्तान में बहुत बात होती है, पाकिस्तान में 1973 का आइन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम ने दिया, मुतफ़िका आइन था. ये किसी को भी नहीं पता कि उस आइन की बुनियाद
क्रूअल ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, यानी भुट्टो ने जो खुद एक फाशिस्ट था उसने वो एक्ट पकड़ा, उसे कॉपी पेस्ट किया, आइन दे दिया, जितनी देर रहा इमरजेंसी लगाई रखी, जिन्होंने आइन पास किया उनको जेलों में डाल दिया. वो आइन जिसने आज तक पाकिस्तान को पिछले 60 साल में कुछ दिया है, मुझे बता दें, तालीम मुफ्त लिखी है नहीं मिलती, हेल्थ मुफ्त लिखी है नहीं मिलती, सोशल जस्टिस नहीं मिलता. तो बेसिकली ये आइन नहीं है, ये नक्शा नहीं है, पब्लिक से नक्शेबाजी है. अब जब तक आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करते, जो मदर ऑफ ऑल इल कहते हैं हम, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिससे कौन आता है, जागीरदार, सरमायादार, भत्ताखोर, क्रिमिनल, कातिल, रस्सागीर, फ्रॉडिये, झूठे, बेईमान. अच्छा, वो आके उन्हें क्या पड़ी है कॉमन मैन की लेजिस्लेट करें, बेसिकली एलीट, रूलिंग एलीट. अच्छा, ये जो नेक्सस है, इधर जुडिशरी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्रियलिस्ट, जागीरदार, पॉलिटिशियन और साथ मीडिया, ये हैं वो आपके पाकिस्तान के 5 आप कह लें तिकोने तो नहीं, वो तो पिरामिड हो जाएगा. ये है वो पेंटेंगुलर जिसके ऊपर आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि हमारा कर्जा जो 99 में 3000 बिलियन रुपीस था, आज वो 97,000 बिलियन रुपीस है. पर हुकूमत तो बड़े नारे लगा रही है, कामयाबी भी हो रही है. हुकूमत का और काम क्या है, आप मुझे बताएं. खान साहब जब थे, खान साहब ने क्या कहा, हमें 20 साल मेरिटोक्रेसी, कैप्टन ठीक होगा टीम ठीक होगी, टीम ठीक होगी कौम ठीक होगी, मैं वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी लाऊंगा, मैं मेरिट लाऊंगा, मैं प्रिंसिपल्स लाऊंगा, मैं वो टीम क्या थी, असद उमर, वो अब कहते हैं मैंने तो नहीं ये बातें की थी, ये तो खान साहब ने की थी, मुझे तो पता ही नहीं था. आपने क्यों पीटीआई ज्वाइन की? मैडम, आई ज्वाइन 2006-7 पीटीआई फॉर अ ईयर. I was then 25. Khan Sahab was then probably 55. In 6 months, I came to know Khan Sahab was not a sane person. Why? हमने पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग गुलबर्ग की बैक पे एक इलाका है मक्का कॉलोनी, अच्छा, वहाँ अरेंज की. मेरी सैलरी तब 2000 रुपये हफ्ता थी, 2000 a week. खान साहब वहाँ ब्लैक लैंड क्रूजर में आए, गालिबन जहांगीर ने दी थी, पिंक वास्केट और पिंक शलवार कमीज पहनी जी, पिंक. उसके गवाह हैं आज भी लोग. खान साहब नहीं पहनी हुई थी, आए मैं गवाह हमारे पास जरूर है. उस वक्त जमाना व्हाट्सएप वगैरह 2007 में नहीं था. खान साहब आए, जनरल सेक्रेटरी पंजाब अमीन जकी आज भी आता है, ये पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं. खान साहब ने डांटा, मुझे मुशर्रफ गिरफ्तार कर रहा है, आप लोगों ने यहाँ कॉर्नर मीटिंग रखी हुई है. डांट के चले गए. मैंने कहा ये कैसा आदमी है, हमें इसने कहा कॉर्नर मीटिंग रखो, हमें डांट के चला गया, ये तो बताइए ठीक नहीं है, गुड बाय. अच्छा, बस इस चीज के ऊपर गुलाबी रंग से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम थी खान साहब के इन नॉन सीरियस बिहेवियर से. तो मैं आई लव पीटीआई. अच्छा, मैं अपने बिजनेस में लग गया, हमारे अपने बिजनेस के प्रॉब्लम थे. मैंने शायद बताया आपको, मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया 2001 में. हम पे 3 करोड़ रुपया लोन था, 5.5 लाख महाना इंटरेस्ट था, 85 बंदे फ्रॉडिये थे, अपना घर नहीं था. जो पाकिस्तान का आज हाल है, हमारी कंपनी का ये हाल था. 12 साल लगा के हमने लोन खत्म किए, इंटरेस्ट खत्म किया, 80 बंदों को निकाला. अल्लाह ने मॉल टाउन में घर दी थी, जहाँ से मैं अभी मॉल टाउन से आया हूँ, मॉल टाउन में हूँ. मैंने ये सोचा कि ये तो मैंने काम कर लिया, अब मेरा बिजनेस भी ठीक हो गया, मैंने फिलैंथ्रोपी भी कर ली, मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल भी कर लिया बिजनेस के लिए. तो ये वेस्ट जो है ये चैरिटी पे तो नहीं चल रहा, ये चल रहा है सिस्टम पे. सिस्टम बनाते हैं अच्छे लोग, बुरे लोग सिस्टम नहीं बनाते. वो लूप होल छोड़ते हैं ताकि एक्सप्लॉइट करें, जो पाकिस्तान का सिस्टम है. तो मैंने कहा क्यों ना हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास है, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई वांट टू डाई एज मिडिल क्लास, आई डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट रूलिंग एलीट. क्यों? Madam, if I become part of ruling elite, then I would have no connection with the common man. I would be disloyal to my cause, which is a prosperous Pakistan for all, not for few. Then it would be a prosperous Pakistan for few, not for all. वो तो है ही. तो मैंने उसके लिए मैंने कहा अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए. Until good people don't come into politics, bad ones will continue to prevail. तो या तो आप बैठ के रो लें, या आप कमरों में बैठ के अच्छी बातें कर ले, कॉफी पी के, बेहतरीन मलाई बोटी, टिक्का बोटी, बर्गर, बिरयानी खा के, कढ़ाई और निहारी खा के, बकरा खा के, लैम्ब रोस्ट या मंदी, ये खा के या तो आप मजे लेके अच्छी बातें करें. पाकिस्तान जाएगा पीछे, आप जाएंगे आगे. देखिए ना, पाकिस्तान में अयूब के ज़माने में जालिब साहब ने कहा 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खा कैसे जीने पे, ये भी कोई जीना है. तब 22 खानदान थे, आपने सुना होगा, आज शायद 2200 खानदान है. यानी वो 22 से 00 लग गया. जो पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम है वो 2 वक्त की रोटी से तंग है. आप बल्कि किसी दिन चलिए मेरे साथ, मेरा हल्का है ग्रीन टाउन टाउनशिप लाहौर, जहाँ से मैंने एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट किया लास्ट इलेक्शन में. आप चलिए, गंदे घर, गंदे बाथरूम, गंदी गलियां, टूटी गलियां, गंदा पानी, बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, मायूसी
اور یہ نواز شریف اور مریم اور بلاول کا لاہور ہے. آپ لاہور میں چلیں, بارشیں بھی ہوئی ہیں, آپ مال ٹاؤن چھوڑ دیں, ہمارا تو ڈی ایچ اے بھی ڈوبا ہوا ہے. اچھا میڈم آپ کا ڈوبا ہوا ہے لیکن آپ سروائیو کر گئی ہیں, وہ کچھ پانی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا, وہ خالی پلاٹوں میں چلا جاتا ہے. آپ جائیں مغل پورہ, آپ جائیں ہربنس پورہ, آپ جائیں بھاٹی, آپ جائیں لوہاری, آپ جائیں موچی گیٹ, آپ کو پتہ لگے مریم اور نواز شریف جو یہ 45 سال سے رول کر رہے ہیں, اگر آپ نکال بھی دیں مشرف کا ایرا تو آپ کو 25 سال مل جائیں گے زیادہ سے شروع کریں. جب یہ ایکسائز منسٹر بنے فرسٹ ٹائم پرابلی 80s میں, تو یہ جو 25-35 سال سے رول کر رہے ہیں, ان کا بھائی شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, یہ کیا 3 بار پنجاب کا چیف منسٹر نہیں رہا؟ کیا حال ہے پنجاب کا؟ آپ مظفر گڑھ چلے جائیں, راجن پور چلے جائیں, آپ ڈیرا غازی خان چلے جائیں, ساہیوال چلے جائیں, چیچا وطن چلے جائیں, تو یہ بیسیکلی چند لوگ بہت امیر ہوئے ہیں. ان کے مے فیئر میں فلیٹس بنے ہیں, ان کے سوئس اپارٹمنٹس بنے ہیں, ان کے دبئی میں مالز بنی ہیں, ان کا ہمارے انٹیریئر منسٹر اس وقت بڑے محترم میرے اسکول فیلو ہیں, میرے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. علیم خان صاحب انفارچونیٹلی میرے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی اس لیے ہی از ناٹ برنگنگ اے گڈ نیم ٹو مائی اسکول. بوتھ محسن نقوی صاحب اینڈ بوتھ علیم خان صاحب. وائی؟ بیکاز دے آر آن دا سیٹ. They should have served the people of their constituency. Interior Minister is for Pakistan. Is not for a constituency. What has he done in regard to security of Pakistan? Has it improved in last couple of years, 4 years? He was Chief Minister as well in interim for 2 years probably. Has Pakistan's province Punjab, has Pakistan's security improved? Has it gone down? Aleem Khan has been in federal cabinet for probably many years, PDM 1, then in PDM 2. What has he delivered to his constituents? What has he delivered as a federal minister? سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں, بلتستان میں بھی لے لی ہیں, کشمیر میں بھی لے لی ہیں, ان کو پٹے بھی ڈالتے ہیں, ان کو وہاں سے وہ اے پارٹی سے بی پارٹی میں کرتے ہیں. مطلب what is your purpose and goal of politics? And to come in power, to serve yourself, to get fame, to earn more money, and to fly around and have perks and privileges, or you want to serve your motherland and the people living in your motherland? That's two different things. آپ سوشلزم میں بلیو کرتے ہیں؟ Well, I believe in socialism, but I believe socialism like China has adopted it. As per your own characteristics. You cannot copy paste a model. For example, if we get a chance to run Pakistan, MPs in UK, we call here MPs, we call here MNAs, we call here senators, office holders, public office holders. None of their children should go to private schools. None of their children and their family members should be allowed to go to private hospitals or abroad for their treatment. Why? Because only then they would pour money into the government school and the government hospitals to improve them and get them treated and get their children over there. Can you tell me any name of any parliamentarian whose children go to government hospital or government school? Obviously not. Now third point is Faria, all the perks and privileges, free petrol, free gas, free employees, free khansama, free clerk, free house, free 20 lakh pension of a judge. Wow. Look at this. And Pakistani at majority are earning 20,000 a month. بالکل ایسے ہی ہے. The gap is too much. Why this so much disparity? Because ruling elite, nexus of ruling elite, and the sleepy public who say okay ہمیں اور جوتے مار لیں لیکن پلیز بندے بڑھا دیں, اتنی سلو نہ ماریں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بندے بڑھائیں. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ نہ تو ان کو مڈل کلاس کو اوپر جانے دیتی ہے؟ میڈم دیٹ از their job. They are doing their job, right? انہوں نے ان کو اسٹک رکھا ہوا ہے. Our middle class, I don't blame the common Pakistani, the 80% of Pakistan, I don't blame him. Why? Because he is earning so little after making so many hours a day. How can you expect him to come out? وہ اپنے خرچے پورے کرے یا یہاں دیکھے. 3 jobs. But how about that 10% or 8% middle class, which is 20 million Pakistanis? Like me, I'm a middle class. I'm not elite. I'm not a common Pakistani. I'm middle class. Where are those 20 million middle class of Pakistan, ladies and gents, who have a decent income, who have a decent house, who have a decent family, their children go to very good schools? Can they not spend 1 hour a day for their country? نہیں, they spend hours on the social media trolling. They spend hours making memes. They spend hours on weekly parties. بالکل. They spend hours on their shoppings, on luxurious living, بالکل. and they keep working. How can they jump from middle class to the elite? That's what they are doing. بالکل ایسی ان کی ریس ہی اور ہے. So Pakistan is going down. So one of my friends, the PTI founding member, Akbar Babar, ideological, principled, visionary, nice, honest man. He said baby is going to be 80 years old, but baby is still weak. Baby is very weak. India, does India not have same year of birth as we have? Why is India strong? Why is there 4 on economy? Why are they progressing in AI, in tech? Because they invested for it 30 years back.
What are we investing in? We are investing in something which is not going to help our country. We are investing in all this publicity, sham publicity. Maryam Nawaz putting her posters on every garbage thing, everywhere she can. आपको पता है मरियम नवाज ने ये देख लिया ना शो तो आप मुसीबत में पड़ I जाएंगे. respect her as a woman, but when I criticize her, she holds a public office. It is my right to criticize her while remaining in respect limits. I respect a woman. I have a wife. I have a mother. I have sisters. लेकिन politically you have all the right I to have speak. all the right to criticize. Well, she is spending billions on plane. She is spending billions on fake publicity. It's all cosmetic. True. Come with me on the ground. I have told you 10 areas of Lahore. I can show you 20 areas of Lahore who are deteriorated. Her uncle has been there for 20 years. Her father has been there for 20. Oh, look at Nawaz Sharif. He went to Azad Kashmir. He said, I would ask my younger brother Shehbaz to make me PM of Azad Kashmir. Look at this statement. His obsession to be PM at the age of 80, where they have ruined Pakistan, plundered money, took it to abroad, to UK and Dubai, Ishaq Dar, Nawaz Sharif, Shehbaz, all their corrupt MNAs, MPs. That's why Pakistan is here today, because few people have become rich, wealthy rich, filthy rich, and millions, hundreds of millions, they become poorer. Look at our GDP. Look at where we are in judiciary, where we are in police, where we are in health, look at our Human Development Index. We're probably in 140s. बिल्कुल ऐसे among 200 countries. That's much we have progressed. हाँ सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ अवाम ही अवाम की दुश्मन है? एक इंसान दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता. अगर फॉर एग्जांपल किसी में थोड़ी काबिलियत ही ज़्यादा नज़र आ जाए तो उस केस में भी उनको इश्यूज़ होने लग जाते हैं. कोई थोड़ा सा अगर ट्रेंडिंग में चला जाए तो मौत पड़ जाती है. नेगेटिव माइंडसेट जो है वो इतना ज़्यादा है कि कोई फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे भी बात करें तो बलूचिस्तान को पंजाब से लड़ाया जाता है, सिंध के अपने एक इश्यूज़ हैं. कौम है कहाँ? मैडम, एक तो ज़रा हमारे मसलिक बहुत हैं, ठीक. दूसरा कौमें फ़र्क हैं, ये भी है. तीसरा मैडम जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके अंदर हमें यूनिटी, हार्मनी, नेशन बिल्डिंग, नेशनलिज्म, वन नेशन, ये पढ़ाया ही नहीं गया. आपने सही कहा, कौमों को लड़ाना, सूबों को लड़ाना, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं मैडम करता. आपने ये कहा ना बर्दाश्त का, मैडम उसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैं तो ये भुगता है, मैंने आपको बराबरी का बताया, मैंने अपने बिजनेस सर्कल में, सोशल सर्कल में ये फील करता हूँ. थोड़ा सा जो एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, थोड़ा ब्लंट है, बस वो तो बंदा फिर कहीं अगर आपकी स्पीड तेज है, अगर आपके अज़ाइम जो हैं वो आपकी नॉर्मल लाइफ के ऊपर भारी पड़ते हैं, आप अपने काम को नंबर 1 रखते हैं, इधर उधर से आके वो लाते खींचेंगे कि गिर जाए, अगला मारे जाए. उसके अंदर ये है कि आप, हमें ये सेंस नहीं आई कि फॉर एग्जांपल आप में कुछ क्वालिटीज है मेरे अंदर नहीं, वो गॉड गिफ्टेड कैपेबिलिटीज हैं आपकी, तो आप यूटिलाइज कर लें. अच्छा, उसे कॉम्प्लीमेंट करें, उस बंदे को रिस्पेक्ट दें, स्पेस दें, उसे कहें मैडम ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है, कैन यू हेल्प मी विद दिस. तो सर ऐसी कौम उठेगी? इसमें नहीं मैडम, इसमें ऐसे आखिर आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया, मैं तो हुई पॉजिटिव, तो मैडम हम 1 और 1 11 तो हो गए. ट्रू दैट. और इस तरह हमने इसको 111, फिर 1011, फिर 1 लाख, 10,000 एक करना, इस तरह करते करते बढ़ना है. I believe not from today, probably 12 years back, in 2016 I thought Pakistan population is तब 20 करोड़ होगी फॉर एग्जांपल. तो मैं कहा यार कोई 2,000 तो पागल होंगे हमारी तरह के. ये मेरा तब ख्याल था. जो इस तरह के लोग हैं ना वो नॉर्मल लोगों को पागल ही लगता है. तो मैडम हम पागल ही हैं ना, मेरे हम ख्याल से ब्लंट इस हैं. वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पागल औरत मैं मशहूर हो चुकी हूँ. और पागल आप सीधी बात करती मैडम हूँ. आप पागल मत में मुझे डाल दें. सीधी बात करती हूँ, मेहनत करती हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत करती हूँ. पसंद तो मैं अपने घर वालों को भी नहीं आती, कोई मसला नहीं, चलता है. अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर एक और माइंड सेट है, मसीहा की तलाश. फिर एक दिन अचानक कोई आएगा, जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक कर देगा, खुद हिलना नहीं. मैडम कायद आज़म और लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद गोली लगी उनको अर्ली 50s में. आप मुझे बताइए, गुलाम मोहम्मद साहब आए और उनको लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की सिकंदर मिर्जा ने, उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की अयूब खान है. ये सारे मसीहा ही हैं पब्लिक आइज में, इसी तरह. ठीक. उसकी लेगेसी किसने फॉरवर्ड की? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो अयूब खान को डैडी कहते थे. पहले सिकंदर मिर्जा के साथ थे, लड़ाई हुई तो फिर देखा पावरफुल कौन है, इधर आ गए, फिर उनको निकाला, बैठ गए. याया का काम किया, पाकिस्तान तोड़ने में उनका किरदार आपके सामने ही है. वो मसीहा थे. अब कायदे अवाम पाकिस्तान को आइन दिया, वो गरीब की दुख नहीं देख सकते थे. उनका मसीहा कौन है? बहुत बड़े मुसलमान नेक आदमी ज़ियाउल हक साहब.
انہوں کو اٹھایا, ان کا میں مسلمان ہوں, پاکستان کو اس وقت اسلام کی ضرورت ہے. جالب صاحب کہہ رہے تھے خطرے میں اسلام نہیں, خطرہ ہے زرداروں سے کو لمبی لمبی کاروں سے, خطرے میں اسلام, جالب صاحب یہ کہتے تھے. اچھا ضیاء صاحب گئے تو کون آئے, ان کے جانشین اجاز الحق صاحب نہیں, نواز شریف صاحب, جن کے بارے میں کہا تھا میری عمر ان کو لگ جائے, ان کو ہی لگ رہی ہے ویسے. اچھا نواز شریف صاحب, بینظیر صاحبہ میوزیکل چیئر. پھر ہمیں ایک مسیح کی تلاش تھی, عمران خان صاحب آ گئے, اسپورٹس مین, charismatic, unpurchasable, integrity, honesty, selflessness, simplicity, captain, merit, competence, Westminster democracy, یہ سب تھا. 4.25 سال وہ پاکستان میں پرائم منسٹر رہے, کوئی 14 سال سے ان کی گورنمنٹ کے پی میں ہے. مجھے تو کوئی کام نظر نہیں آیا. آپ حیران ہوں گی کہ جو قرض پاکستان کا 3000 ارب روپیہ تھا 99 میں, جنرل مشرف چھوڑ گئے, وہ بھی ایک مسیحا تھے, وہ چھوڑ گئے 6000 ارب پہ, نواز شریف صاحب چھوڑ گئے 14000 ارب پہ, زرداری صاحب, اور نواز شریف صاحب چھوڑ گئے 24000 ارب پہ, خان صاحب چھوڑ گئے 44000 ارب پہ. آج PDM1 PDM2 جو کہتے ہیں شبانہ روز محنت ہو رہی ہے اور یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا, 97000 ارب ہے. 8000 ارب سال کا ہم سود دیتے ہیں, 47% بجٹ. یہی سارے ہمیں تحفے ملتے رہے ہیں پچھلے 80 سال میں. عوام کے لیے صرف اتنا میسج ہے, کسی مسیحا کا انتظار نہ کریں. یہ عامر خان والے PK والے رانگ نمبر ہیں, یہ مسیحا نہیں ہے. خود نکلیں, روڈز پہ آئیں, لیڈرشپ کے اندر آئیں, لیڈرشپ رول میں آئیں, پالیٹکس میں حصہ لیں. ان پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, فیس بک بیٹھ کے رونا ہے, پھر آپ کا اس سے برا حال ہوگا. پھر آپ کو OPM, بھنگ اور نیند کی گولیاں زیادہ کھانی پڑیں گی. پہلے ماشاء اللہ آج کل یہ سب کافی زیادہ کامن ہے. یس سر, جنرلی اگر دیکھا جائے تو ایک کاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انقلاب اگر ہم بات کریں یا ایون بیٹرمنٹ کی کوئی بات کریں, ہمیشہ ایک کاز ہوتی ہے, ایک کامن اینمی ہوتا ہے. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, دے آلویز نیو سری لنکا کو, کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. جیسے آپ نے مینشن کیا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں, کمپلیکس. تو ایگزیکٹلی اب پاکستان کی یوتھ کس کاز کے لیے, کس کامن اینیمی کے لیے باہر آئے؟ رولنگ ایلیٹ, نیکسس آف رولنگ ایلیٹ, انگریز کے ظالمانہ سسٹم جس کے اوپر 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا, جو آپ کو کچھ نہیں دیتا. آج رولنگ ایلیٹ کے لیے پولیٹیکل سسٹم بھی ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, ہیلتھ سسٹم بھی ہے, جوڈیشل سسٹم بھی ہے, بیوروکریسی سسٹم بھی ہے, سب سسٹم ہے. کیا ایک کامن مین کے لیے کچھ ہے؟ آپ کو میں نے کہا چلے میرے ساتھ, میرے حلقے میں ہی, لاہور میں ہی, میں دور کی بات نہیں کرتا, جا کے دیکھیں وہاں ڈسپینسری کا حال کیا ہے, اسکول کا حال کیا ہے, گلیوں کا حال کیا ہے, گندا پانی, گندے گھر, گندے واش روم. بولتے کیوں نہیں پھر لوگ؟ میڈم اس لیے ایجوکیشن نہیں, شعور نہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں, اپروچ نہیں, ویژن نہیں, اور پھر اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں. اچھے لوگوں کو سپورٹ کیوں کریں سر؟ اس لیے خود اچھے کریں, نہیں میڈم نہ کریں تو بھگتیں. یو گیٹ واٹ یو پے فار. ٹرو. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ دیا, وین آئی واز بینگ ٹرولڈ, میں نے کہا بات سنو, یہ پیٹرول سے مجھے فرق نہیں پڑتا, میں تو جیسے پہلے چل رہی تھی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پڑے گا تم لوگوں کو. میڈم میں نے پیٹرول کا آج سے 5 سال پہلے خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ویڈیو خان صاحب کو بھجوائی, خان صاحب کو مل گئی, خان صاحب نے کہا ہمیں سارے مسئلے کا حل مل گیا, ہم نے IMF کے پاس. وہ کیا تھا, وہ یہ تھا لینڈ کروزر کتنے کی ہے, 12 کروڑ کی, اس کو ڈالیں پیٹرول 3000 روپے لیٹر. بائک والے کا پیٹرول آٹومیٹیکلی 80 روپے کا ہو جائے گا. اس کو ریشنلائز کر دیں, بائک آپ کی گاڑی مہران, پھر آپ کی کلٹس, پھر اوپر 1300, پھر 2000, پھر 2500, 3000 خود ہی ہو جائے گا. لیکن ڈو یو ہیو دا ول اینڈ انٹینشن اینڈ سنسیئرٹی اینڈ سیلفلیس؟ آئی ڈاؤٹ یو ہیو اٹ. ہے نا, آئی ڈاؤٹ دیٹ ٹو. ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وائی شوڈ دے جوائن دا کاکروچ پارٹی پاکستان؟ ویری سمپل, فار دیم سیلفس, ان کے اپنے لیے. ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں وہ خود لیڈرشپ رول میں آئے. ان کے لیے پلیٹ فارم ہے کہ وہ فیس بک پہ اور گھروں میں بیٹھ کے نہ روئیں, لان تان نہ کریں, کم آن گراؤنڈ, سڑکوں پہ نکلیں, پبلک آفس ہولڈرس کے آفیسز کے باہر پہنچیں, اپنے رائٹس ڈیمانڈ کریں, پیسفلی, لا فلی, پلے کارڈ, کوئی ڈنڈا, کوئی گملہ, کچھ نہیں ٹوٹنا. کیپ ڈوئنگ اٹ. دے ول پبلک آفس ہولڈرس پہ جب تک پبلک پریشر نہیں پڑے گا, کانسٹنٹ کنسسٹنٹ. نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. ہم دکھا دیں گے تو کچھ مل جائے گا, ورنہ پیٹرول سے کا فرق آپ کو بھی نہیں پڑتا, مجھے بھی نہیں پڑتا. ہماری تو لائف چل ہی رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی ہوپ آپ کے اس نوبل مشن میں لوگ جو ہیں وہ ساتھ دیں گے. میں آئی ایم ود یو اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں, جو دن رات سوائے بری چیزیں لکھنے کے, میمز بنانے کے اور گھٹیا کنٹینٹ دیکھنے کے, جو ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ اپنے لیے کچھ سوچ لیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیپ واچنگ جوان پاکستان اینڈ لیٹ می نو یہ کاکروچ پاکستان میں جو پارٹی کاکروچ پارٹی بنائی جا رہی ہے, کیا آپ تھوڑا سا انیشیٹو کے اندر آئیں گے یا کانٹینٹ اپنی مرضی کا ہی چلانا؟ شکریہ.